Welcome, student. Welcome. Good morning to everyone. Today's topic is conservation of angular momentum. Conservation of angular momentum. The angular momentum, you can write down the statement. The angular momentum of system of particles remains constant if no external torque acts on the system. Acts on the system. मैथमेटिकली हम इसको लिख सकते हैं torque is 0, then J, or you may call it L, is constant. I omega is constant. And we have I1 omega 1 equal to I2 omega 2. So omega is inversely proportional to I. If I will increase, अगर moment of inertia of system increase होगा, तो angular speed definitely decrease होगी. और अगर moment of inertia reduce होगा, then angular speed will increase. So you can note it down. So I am clearing this. When no external torque acts on the system, the angular momentum is conserved. जैसा कि आप जानते हैं angular momentum is given by I into omega equal to constant. Angular momentum को हम
ऐसे भी लिख सकते हैं, because J or L can be written as 2 EI. E is the kinetic energy of rotation, kinetic energy of rotation, and I is the moment of inertia of system, moment of inertia of system. तो अगली स्लाइड पे जाते हैं और इसको भी समझते हैं। अगर ये कांस्टेंट होगा तो वी कैन राइट डाउन। अब देखिए, अब हम इसको लिख सकते हैं, इसको क्लियर करने जा रहे हैं। J इक्वल टू एल, या तो आप एंगुलर मोमेंटम को J से रिप्रेजेंट कर सकते हैं या L से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, L से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। Okay, so we know that 2EI is constant, so we can say that E into I is constant. Energy of rotation is inversely proportional to I. If I will increase, energy of rotation will reduce. If system's moment of inertia, ऐसा भी हो सकता है कि सिस्टम का मोमेंट ऑफ इनर्शिया डिक्रीज हो जाए, तो काइनेटिक एनर्जी ऑफ रोटेशन विल इंक्रीज, एंड वी कैन हैव दैट E1 I1 इक्वल टू E2 I2। तो इसको आप नोट कर लीजिए अच्छे से। और अपवर्ड एरो बताता है इंक्रीज, और डाउनवर्ड एरो बताता है डिक्रीज। अब देखिए कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। एंगुलर मोमेंटम of every planet is conserved. Every planet in the galaxy follows the law of conservation of angular momentum. तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आप इसे नोट कर लें। Now we'll take one example, a very good example of angular momentum. इसको आप नोट कर लीजिए। Okay, I am clearing this. अब देखिए एक बहुत बढ़िया एग्जांपल है जो आपको नोट करना है एंगुलर मोमेंटम पे। ये देखिए, a person carrying heavy weights in his hand. Note down please. The person is carrying heavy weights in his hand.
and standing on a rotating platform can change the speed of platform. अब वो अपने प्लेटफॉर्म की स्पीड को चेंज कर सकता है. कैसे? When the person suddenly folds his arms, its moment of inertia decreases and according to angular speed increases. तो आप पहले इसे नोट करिए, फिर अगली स्लाइड में आपको इसको समझाते हैं कि that how it is possible. And whenever you note down, please tell me. और इसी में हम आगे लिख सकते हैं if person outstretch like that his arms, then moment of inertia of system increases and angular speed decreases. तो अपना मोमेंट ऑफ इनर्शिया रोटेटिंग प्लेटफॉर्म पे मोमेंट ऑफ इनर्शिया को वो चेंज कर सकता है. वो अपने हैंड्स को ड्रॉप कर देगा, आउटस्ट्रेच कर देगा. अब देखिए आपने इसे नोट कर लिया होगा. अगली स्लाइड में देखेंगे कि ये कैसे होता है. This is a very common example given in most of the books. बहुत सारी बुक्स में ये एग्जाम्पल दिया हुआ है. ये देखिए, इसको समझना है कि ये कैसे होता है. ये देखिए इस केस में आप देखिए पर्सन का मोमेंट, दिस इज द एक्सिस ऑफ रोटेशन. अब देखिए मासेस आर अवे. जैसे जैसे मास एक्सिस से दूर चले जाएंगे तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया इस केस में क्या होगा? मोर. अब हैंड्स को उसने ड्रॉप कर लिया. ये हमारा एक्सिस ऑफ रोटेशन है. इसको बनाने की जरूरत नहीं है, इसको सिर्फ समझने की जरूरत है. तो when hands comes nearer to the axis of rotation, moment of inertia is less. तो जब मोमेंट ऑफ इनर्शिया हम जानते हैं कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम आई ओमेगा इज कांस्टेंट. ओमेगा is inversely proportional to I. If I is more, then omega is less. स्पीड कम है. If I is less, then omega is more. तो जैसे जैसे मास एक्सिस ऑफ रोटेशन से दूर जाएंगे आपको इसको समझना है. There is no need to draw. Hands are outstretched. इस पोजीशन में हैंड्स क्या है? आउटस्ट्रेच्ड है. तो मास इज अवे फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन. हियर द मास इज, अब देखिए यहाँ जो डिस्टेंस है आर और यहाँ मास का जो डिस्टेंस है एक्सिस ऑफ रोटेशन से आर, तो कौन सा डिस्टेंस ज्यादा है? यहाँ डिस्टेंस ज्यादा है. और डिस्टेंस के ज्यादा होने से क्या होगा? मोमेंट ऑफ इनर्शिया ज्यादा हो जाएगा, क्योंकि हम जानते हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है mr स्क्वायर. तो वो अपने हैंड्स को आउटस्ट्रेच फैला देगा तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया इंक्रीज हो जाएगा, एंगुलर स्पीड डिक्रीज हो जाएगी. अगर वो अपने हैंड्स को ड्रॉप कर देगा तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया रिड्यूस होते ही एंगुलर स्पीड क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी. तो वो अपनी एंगुलर स्पीड को कंट्रोल कर सकता है बाय हिज हैंड. दैट ऑल आई वांट टू से दैट. तो व्हेन यू नोट इट डाउन, प्लीज टेल मी.
A good number of questions we have to solve on the conservation of angular momentum. Important topic, expected topic. Okay, are you done with this? तो ये बात हमें ध्यान रखनी चाहिए कि किसी भी रोटेटिंग सिस्टम का हम मोमेंट ऑफ इनर्शिया चेंज करके उसके एंगुलर स्पीड को चेंज कर सकते हैं if no external torque acts on the system of particles. So this can be done very easily. So are you done with this? आपको इसे समझना है. This is very important. अब देखिए. Now we will start with some questions on conservation of angular momentum. Okay. Question number 1. A thin circular ring. पूरा लिखना पड़ेगा आपको. A thin circular ring of mass m and radius r is rotating about its own axis, about its axis, with a constant angular velocity omega. Four objects each of mass m, each of mass m are kept gently to the opposite ends of two perpendicular diameters of the ring. The new angular velocity of ring, the new angular velocity of system is four answers. Third answer, m minus 4m upon omega upon m plus 4m. Fourth answer,
m omega by 4m। अब देखिए, ये पहले केस था, इसके बाद सेकंड केस था ये। दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अब यहाँ पर इनिशियल एंगुलर मोमेंटम हम लिखेंगे L1 इज I इंटू ओमेगा, और रिंग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट दिस सेंट्रल एक्सिस होता है m r स्क्वायर ओमेगा। अब हमने अपोजिट एंड्स ऑफ डायमीटर पे ये देखिए 4 पार्टिकल्स को रख दिया। कैसे रखा, देखिए, एक पार्टिकल यहाँ रखा, दूसरा यहाँ रखा, तीसरा यहाँ रखा, चौथा यहाँ रखा। तो अब इस केस में आपका एंगुलर मोमेंटम क्या हो जाएगा, L2 नया मोमेंट ऑफ इनर्शिया I डैश, नई एंगुलर स्पीड ओमेगा डैश। सो न्यू मोमेंट ऑफ इनर्शिया विल बी mr स्क्वायर तो पहले ही था, प्लस ये चारों मास सेंटर से पास होने वाले एक्सिस से कितने डिस्टेंस पर है, r डिस्टेंस पर है। तो ये इनका मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऐड 4mr स्क्वायर। अब हमें कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम को अप्लाई कर देना है। L1 इक्वल टू L2 mr स्क्वायर ओमेगा इक्वल टू r स्क्वायर, हम कॉमन ले लेंगे। ये देखिए कैपिटल R नहीं है, ये यहाँ हमें लिखना पड़ेगा स्मॉल r। ओके, here we take r square common, we get it m plus 4m into omega dash. Now this will get cancelled, so omega dash will be a। आंसर इज नॉट इम्पोर्टेंट, करा कैसे गया है उसको सीखना चाहिए। फिर आप ओमेगा डैश निकाल लेंगे। ओमेगा डैश विल बी m ओमेगा अपॉन m प्लस 4m। 4 पार्टिकल की जगह 2 भी हो सकते हैं, 6 भी हो सकते हैं, 8 भी हो सकते हैं। So note it down, then we'll move switch to the next question. ओके, तो आपने इसे नोट कर लिया, तो हम इसको क्लियर करने जा रहे हैं स्टूडेंट्स। तो दिस इज अ वेरी गुड क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 2,
Okay, so I'm clearing this. फोर पार्टिकल्स भी हो सकते हैं, दो भी हो सकते हैं, छह भी हो सकते हैं, आठ भी हो सकते हैं। तो अब यहाँ देखिए ये 4m है, बिकॉज देयर आर फोर पार्टिकल। अगर दो होते तो 2m होता, छह होते तो 6m होता, 8 पार्टिकल्स होते तो 8m होता। Okay, so I am clearing this. Question number 2. If mass of Earth remains constant and its radius suddenly reduces to half, what will be the new duration of day? अब देखिए हम इसको सॉल्व करेंगे। देखिए पहला पॉइंट, एंगुलर मोमेंटम ऑफ अर्थ, momentum of earth is conserved. So I omega is constant. अब देखिए अर्थ rotates about its diameter. So moment of inertia is 2 by 5 mr square. Omega is 2 pi by t. Since mass is constant, so we can say that r square by t is constant. We can say that t is proportional to r square. T is proportional to r square. तो आप देखिए अब हम ऐसे लिख सकते हैं T1 upon T2 equal to R1 square upon R2 square। पहले ड्यूरेशन ऑफ डे थी 24 आवर्स, अब हमें नई ड्यूरेशन ऑफ डे निकालनी है। सपोज रेडियस इज आर, अब आर का कितना हो गया है, आर बाई 2 हो गया है। सो वी विल गेट इट 24 बाई T2 equal to 4. So T2 will be 6 hours. T2 will be 6 hours.
So note it down. अभी सब क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है. Sorry. So we are moving to the next question. आपने इसे नोट कर लिया. ओके, तो हम क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं. If density of Earth remains constant, if density of Earth remains constant, and if radius and if its radius reduces to half, what will be the new duration of day? अब जैसा कि हम जानते हैं, the moment of inertia of Earth is conserved, angular momentum of Earth is conserved. We have I into omega is constant. I can be written as 2 by 5 mr square. Omega can be written as 2 pi by t is constant. अब देखिए क्या होता है कि मास को हम लिख सकते हैं डेंसिटी इंटू वॉल्यूम. 2 by 5 डेंसिटी इज डी, वॉल्यूम अर्थ को का वॉल्यूम हम ले सकते हैं 4 by 3 पाई आर क्यूब, और पहले से है आर स्क्वायर 2 पाई बाय टी. So you will get it 4 pi d 15, ये सब कांस्टेंट है. r to the power 5 by t is कांस्टेंट, क्योंकि अब d क्या है, कांस्टेंट है. तो हम कह सकते हैं r to the power 5 upon t is constant. So we get it, t is proportional to r to the power 5. t1 upon t2 equal to r to the power 5 upon r by 2 to the power 5. अब पहले ड्यूरेशन ऑफ डे कितनी थी, 24 आवर्स. अब ये 2 की पावर 5 ऊपर जाके कितना हो जाएगा, 32. तो न्यू ड्यूरेशन ऑफ डे विल बी 24 by 32, दैट इज 12 by 16. 2 से कैंसिल कर दिया, 4 से कैंसिल कर देंगे, 3 by 4 आवर्स. और 3 by 4 आवर्स को हम लिख सकते हैं 45 मिनट्स.
आप इसे नोट कर लें। सिंपल क्वेश्चन। अब आप इतने उसमें मत करिए। ये देखिए आप सिर्फ, हमें टाइम पीरियड और उसमें एक रिलेशनशिप चाहिए थी। तो 16 होगा, ठीक है, चलेगा, कोई फर्क नहीं पड़ता इससे। 16 कर लीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता। मेन ये है। तो अब हम इसको क्लियर कर रहे हैं। तो ये चीज आप ध्यान रखिए, है ना। ओके। अब एक बहुत सिंपल क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। A ballet dancer, which you can do also, dancing on a smooth floor. On a smooth floor. Dancing on a smooth floor, spinning about a vertical axis. About a vertical axis. With her arms folded. With an angular speed of 20 radian per second. 20 radian per second. When she stretches her arms fully. The spinning speed decreases to 10 radian per second. 10 radian per second. If I is the initial question is simple, moment of inertia of the dancer. The new moment of inertia. आप भी कर सकते हैं इस क्वेश्चन को while writing down. Inertia is 2i 3i I by 2 b I by 3. So we'll do this question. We know that I1 omega 1
इक्वल टू I2 ओमेगा 2। तो आप इसका आंसर खुद भी निकाल सकते हैं। तो पहले मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या था? I था। स्पीड क्या थी? 20 थी। वेरी सिंपल। तो बाद में मोमेंट ऑफ इनर्शिया I2 हो गया, स्पीड क्या हो गई? 10 हो गई। सो I2 विल बी 2I। So the answer is A. So one can easily solve the questions. एंगुलर मोमेंटम भी आपको निकालना आना चाहिए। Sometimes what happens, ये एग्जाम में वेक्टर अप्रोच आ जाती है तो स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम हो जाती है। तो मैं आपको एक क्वेश्चन अभी करके बता देता हूँ वेक्टर पे। वेक्टर अप्रोच भी बड़ा क्लियर होना चाहिए। और वेक्टर प्रोडक्ट निकालना आना चाहिए और वेक्टर का बेसिक्स मालूम होना चाहिए। तो इसको क्लियर कर रहे हैं। ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। द पोजिशन of a particle is given by at vector r I plus 2j minus k and its momentum p 3I plus 4j minus 2k. The angular momentum is, क्वेश्चन अच्छा है। The angular momentum is perpendicular to first answer x-axis, second answer y-axis, third answer z-axis, fourth answer line at equal angles to all the three axes. अब देखिए हम इसको यहाँ सॉल्व करेंगे स्टूडेंट्स। अब देखिए एंगुलर मोमेंटम एंड वेक्टर फॉर्मेशन r क्रॉस p इज गिवन बाय, ये आपको सीखना पड़ेगा, i j k। क्रॉस प्रोडक्ट सीखना पड़ेगा आपको। 1 2j minus 1k। नाउ 3 4 minus 2। तो आपको इसे निकालना आना चाहिए। जीरो इंटू आई minus j। You must learn it from 11th class book. अब देखिए ये आपका माइनस j प्लस 2k
और जे और के वो वेक्टर्स होते हैं, ये मैं आपको बड़ा क्लियरली बताना चाहता हूँ। ये एक्स एक्सिस और ये हमारा हो गया जेड एक्सिस। इसका वेक्टर होता है आई, इसका होता है जे, इसका होता है के। और देखिए आई हमेशा जे और के से कितना एंगल बनाता है, आई हमेशा जे और के से कितना एंगल बनाता है, 90 डिग्री। और देखिए एंगुलर मोमेंटम इज in terms of J and K. That means perpendicular to x-axis. क्योंकि y और z, j और k हमेशा x-axis पे perpendicular होते हैं, perpendicular to x-axis. This is an important question. तो आपको क्रॉस प्रोडक्ट निकालना आना चाहिए. You must know how to calculate the क्रॉस प्रोडक्ट. जब तक आपको क्रॉस प्रोडक्ट निकालना नहीं आएगा तब तक आप इन सब चीजों को नहीं कर सकते. क्योंकि आई हमेशा जे और के से कितना एंगल बनाता है, 90 डिग्री. ओके, तो हम इसे क्लियर कर रहे हैं. हैव यू डन? ओके, ये आपको सीखना पड़ेगा क्रॉस प्रोडक्ट. Go through the 11th class book and learn it. That how to find the cross product of two vectors. Okay, I am clearing it. और फिर मैं आपकी कन्वीनियंस के लिए थोड़ा आपको क्लियर कर देता हूँ. देखिए, फॉर एग्जाम्पल देखिए, if R is R1I plus R2J plus R3K and P is P1I plus P2J plus P3K, then R cross P is given by I, J, K, R1, R2, R3, P1, P2, P3. R2, P3 minus P2, R3. R3, P1 minus R1, P3. K is given by R1, P2 minus R2, P1. And that is angular momentum. आप इसको नोट कर लीजिए. And chat with me that you have done it.
ओके, तो इस तरह से हम एंगुलर मोमेंटम को क्या कर सकते हैं, एंगुलर मोमेंटम को हम क्या कर सकते हैं, कैलकुलेट कर सकते हैं। और आपको वेक्टर का आइडिया होना चाहिए। तो हैंड पर्सन वाला एग्जांपल है, अब जैसे एग्जामिनेशन में अब कई बार क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन, बिफोर जंपिंग इन वाटर before jumping in water from above, a swimmer bends his body to, बेंड क्यों करता है, जिससे वो अपना मोमेंट ऑफ इनर्शिया रिड्यूस कर ले, और जैसे ही वो मोमेंट ऑफ इनर्शिया उसका रिड्यूस हो जाएगा तो उसकी एंगुलर स्पीड क्या हो जाएगी, डाइविंग स्पीड क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। तो ये आंसर्स है, इंक्रीज मोमेंट ऑफ इनर्शिया, डिक्रीज मोमेंट ऑफ इनर्शिया, decrease. Sometimes a simple question has a twist, decrease the angular momentum. Fourth answer, reduce the angular speed. Swimmer bends his body to reduce angular, to reduce moment of inertia, to reduce moment of inertia, so that angular speed increases. तो कई बार क्या होता है, क्वेश्चन बहुत सिंपल होते हैं। अब देखिए इसमें ये है कि कुछ बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होते हैं कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम पे, दे वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। तो वो उन्हें अब हम नेक्स्ट सेशन में, अभी जो नेक्स्ट सेशन लेंगे उसमें लेंगे, और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को क्या करेंगे, कवर करेंगे। आप इसको नोट कर लीजिए और बताइए कि आपने नोट कर लिया है कि नहीं। ओके, ये बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं क्वेश्चन। सो दैट एंगुलर स्पीड इंक्रीजेस, डाइविंग स्पीड क्या होती है, जो डाइविंग स्पीड ऑफ एंगुलर स्पीड ऑफ डाइविंग क्या हो जाती है, वो फास्ट हो जाती है।
इसलिए वो अपनी बॉडी को कर्ल कर लेता है, बेंड कर लेता है। डाइवर हमेशा डाइव करते वक्त अपनी बॉडी को बेंड करता है। तो इसको क्लियर करना है। तो कुछ बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हम लोग करेंगे अगले सेशन में, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट और एक्सपेक्टेड।